the plan for today is we are going to be doing some selected questions from two papers, which are paper 3 variant 1, November 2021, and November 2021 paper 3 variant 3. ठीक है, variant 1 और variant 3 से ये हम basically कर रहे होंगे आज. Okay, let me just figure something out. Okay, yeah. ठीक है, ये हम दो पेपर्स करेंगे आज. इनमें से सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, we'll just be doing some selected questions. So first of all, we've got this paper 3-1. From this paper we are going to be doing these questions 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. इसमें काफी सारे questions थे which were slightly tricky. So this is going to take a major chunk of our time today, and hopefully we can then move on to the next paper. And from that paper 3-3, we are going to be doing these 3 questions, question number 6, 10, and 11. इससे 3 questions कर रहे होंगे, but paper 3 variant 1, उसमें the number of tricky questions that I thought the questions that were slightly trickier, they are more. So they're like 8 questions that I would want to do at least from this paper. तो इसमें हमारा ज़्यादा time लगेगा. ठीक है? This is what we're going to start with right now. So let me repeat, this is paper 3 variant 1, November 2021. Okay, let's begin. Now, so you know about the instructions already. बस आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने working पूरी show करनी है, और जो भी आपके steps होंगे, जो numbers आपने लिखने हैं, answers लिखने हैं working के दरम्यान में, they should all be to at least 4 significant figures. You've got to keep that in mind. ठीक है? Okay, let's begin. Question number 1. So we have to solve this equation 4 into modulus of 5 raised to power x minus 1 equals 5 raised to power x. This is a modulus equation, but it also involves x in the power. So इसमें log भी लग रहा होगा. Now, what's the process that we have for solving equations that involve the modulus sign? हम क्या करते थे? We put plus minus on any one of the two sides. So let's say हम यहाँ पे left side से modulus खत्म करते हैं और इधर plus minus लगा देते हैं, but it doesn't really matter which side you put this on. You can put this on any of the two sides. I'm putting this on the left side. Plus minus 4 into 5 raised to power x minus 1, that equals 5 raised to power x. So we've gotten rid of the modulus sign, and now we've got 2 equations, either 4 into 5 raised to power x minus 1 equals 5 raised to power x, or we've got minus 4 into 5 raised to power x minus 1 equals 5 raised to power x. And now what we do is we solve both of these equations separately. कैसे solve करेंगे? We've got x in the power and we've got 5 raised to power x on both sides. हम substitution कर सकते हैं. We can say let another variable, let's say u equals 5 raised to power x. Let's use the substitution. What does that give us? That gives us 4 into u minus 1 equals u, and that's 4u minus 4 equals u, and that is 3u equals 4, u equals 4 over 3. एक हमारे पास ये value आ गई u की. Now, we had substituted u equals 5 raised to power x. So 5 raised to power x equals 4 over 3. That's going to give us some value. Log ले लें दोनों sides के ऊपर. So we have ln of 5 raised to power x equals ln of 4 over 3. The x in the power goes here on the side, and we've got x into ln 5 equals ln of 4 over 3. X equals ln of 4 over 3 divided by ln of 5. इसको evaluate कर लेंगे. We'll get one value of x from this. ठीक है? Let's evaluate this. I'm going to do this on my calculator and see what we get from this. Walaikum assalam, Aisha. ln of 4 divided by 3 divided by ln of 5. What do we get? We get 0.1787. Okay. So x equals 0.1787. एक हमारे पास ये value आ गई x की. Let's look at the other one now. The other equation, we had minus 4 into 5 raised to power x. Again, we are doing the substitution. U equals 5 raised to power x. And what do we get from that? We get minus 4 into u minus 1. That equals u. And that gives us minus 4u plus 4 equals u. And that's 4 equals 5u. एक और value हमारे पास आ गई u की, that is 4 over 5. ठीक है? Again, we had substituted u equals 5 raised to power x. So उस substitution को वापस input कर देंगे. We get 5 raised to power x equals 4 over 5. Take log on both sides.
ln of 5 raised to power x, that equals ln of 4 over 5. Again, x comes here. X into ln 5 equals ln of 4 over 5. And finally, we get x equals ln of 4 over 5 divided by ln of 5. And that's going to give us another value of x. Let's see what that turns out to be. Can somebody please confirm the calculations along with me as well? Just make sure that you are checking if they're, in case you're making any careless errors. Ln of 4 raised to power 5 divided by ln of 5 minus 0.1386. Okay, minus 0.1386. Okay, so we've got two values of x. Okay, x equals 0.1787 and x equals minus 0.1386. Now it's better to just check these values in the original equation as well. Normally equations में इतना मसला नहीं होता, but modulus के अंदर there is going to be a possibility कि आपके आंसर में से कोई एक satisfy ना करता हो. So it's generally safer to just verify both of them here and see कि अच्छा कोई दोनों आंसर satisfy करते हैं या कोई उसमें से नहीं करता. ठीक है? Yes, Aisha, I am reading chats. Walaikum assalam, 𝗪𝗏𝗃𝗶𝗃. Okay. So we've got these two values of x. Okay, we've got these two values of x. ये हमारे पास results. Again, any problems with this? Any questions on this? Is this clear to everyone? Let's move on. So that was the first one. अच्छा, एक हमने एक question देखना था. 𝗪𝗏𝗃𝗶𝗃, what we are doing is actually we don't have dates decided. We have sessions decided कि हम कौन से session में क्या करें. So we basically have, so it's a rough schedule, not very exact, but currently we are here. Okay, so the next session, hopefully we'll have it tomorrow. That will be this one, paper 1-1, and then the next paper 3-1, and then 4-2, and then 5-1. So this is the order that we have. कभी-कभी मुझे किसी दिन class miss करनी पड़ती है, तो वो next day पे shift हो जाता है, but this is the order that we're going to have for us. इसको थोड़ा सा मैं tweak भी करूँगा, because we realized कि ये सारे papers 2 दिन में करना मुश्किल हो जाता है. तो ये वाले papers हम 3 दिन पे shift कर देंगे, but roughly this is going to be the schedule. Okay, so the next paper 3 that we're going to do is going to be the day after tomorrow, most likely Monday, inshallah. Okay, you can take a picture of this for the next few days at least, so you can refer to this later. Okay, let's go back to there. Go back to that paper. Paper 3, variant 1. So we were right here. So this is the first question. इसमें modulus भी था और logs भी आ रहे थे. We got 2 results from this. आप इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं. If you want to write it rounded off, you can also write it to 3 significant figures. That's going to be 0.179 and minus 0.139. ठीक है? Okay, let's move on. अच्छा, express 5 sine x minus 3 cos x in the form r sine x minus alpha, where r is greater than 0 and alpha is between this. Now this part is relatively straightforward, but इसका second part हमने देखना है, so उसके लिए हमें first part करना पड़ेगा. अब इसका एक standard तरीका होता है हमारे पास, ये form है, इसको हमने इस form में represent करना है. We've got the formulas, you can just remember that. You don't have to show the whole proof for this. What you'll do is you've got r equals square root of a square plus b square, where what does a mean? What does a represent? This first number that you have here, that's a. The second number that you have here, that's b. Ignoring the sign. ठीक है, minus sign को नहीं consider करना. Sign को ignore करके the numbers that you've got, they are a and b. Okay, so r equals square root of a square plus b square, and tan alpha equals b over a. आपने सिर्फ ये formulas apply करने हैं, आपके पास वो दोनों values आ जाएंगी. R equals square root of a was 5 squared, b was 3 squared, and you'll get some result from this. 25 plus 9, that is 34. R equals square root of 34. ये value आ गई. Now you've got tan alpha. Tan alpha equals b over a. B is 3, a is 5, and we get a value of alpha from this. We only need acute angle
तो हम वो निकाल लेंगे यहाँ पे tan inverse of 3 divided by 5 and the answer has to be in radians. Keep that in mind. Range आपकी radians में दी हुई है, तो आपने radians में आंसर देना है। या देखें क्या आता है। I'm going to convert my calculator to radian mode and see what it gives me. 0.54. That's what I'm getting. Now keep in mind, यहाँ पे जो उसने instruction दी हुई है, it's absolutely necessary to follow this. उसने कहा 2 decimal places. उसने कहा 2 decimal places. You have to write it to 2 decimal places. इसको 3 decimal पे लिखेंगे, you lose a mark. इसको 1 decimal place पे लिखेंगे, you lose a mark. Exactly follow करना है उसको, ठीक है? Okay, good. This is pretty straightforward. इसमें आपको 2 formulas apply करने हैं। आप लोगों से अक्सर क्या करते हैं, वो पूरा वो prove करने बैठ जाते हैं। You don't need to do that. Just remember these formulas for the exam perspective. Of course, it helps to know कि वो कहाँ से ये formulas कहाँ से आ रहे हैं। But when you're doing this in an exam, आपको सिर्फ ये formulas apply करने हैं। 2 steps होती हैं, 3 marks free के होते हैं। Okay, so you can do them directly like this. Okay, आयशा बेटा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। वो बेसिकली ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेंसुरेशन वाला पार्ट जो होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके वो ओ लेवल वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग हो। फॉर्मूला सारे वही यूज हो रहे होते हैं, बट देन यू गेट बेटर दिस विद प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट वाइज की बहुत नई चीज नहीं होती, बस क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं अक्सर। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, उतना you'll start getting better at this. Okay, अच्छा, so we've got the first part here, question number 2 part A, ये हमने कर लिया। Let's do the next part. Next part में उसने क्या कहा है, hence state the greatest and least possible values of 5 sin x minus 3 cos x whole square. Okay, अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, it's basically the same thing as this, बस इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है? जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उसको हमने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ऊपर हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी, अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी, तो वो फॉर्म क्या बनी आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। इवेंचुअली जो फॉर्म हमारे पास बनी, दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 34, दैट्स आर, इनटू साइन x minus alpha. Alpha is 0.54. This is the form that you're getting. So now this thing that you've got here inside the bracket, inside the square, that can be written as square root of 34 sine x minus 0.54 होल स्क्वायर। तो इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए, जब भी आपने ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यूज फाइंड करनी होती है या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होती है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म दैट इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी यहाँ पे साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, इसकी डायरेक्ट रेंज नहीं निकाल सकते। देयर इज नो मेथड फॉर डूइंग दैट। तो पहले आपने इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, आइदर साइन और कॉस। वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया कि हमने सिर्फ इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेंगे कि इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है? अब ग्रेटेस्ट लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस जहां पर आते हैं, हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि साइन जो होता है वो कहां से कहां तक होता है। साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है, ठीक है? तो इसकी जब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज आप देखोगे, आपको एसेंशियली 3 पॉइंट्स चेक करने होते हैं। एक तो आप -1 और +1 देखते हो, लेकिन जब स्क्वायर आ जाता है तो -1 और +1 पे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। आपको एक पॉइंट और देखना होता है, दैट्स राइट इन द मिडिल, 0 पे आपको देखना होता है, -1 पे देखना होता है, +1 पे देखना होता है। जब स्क्वायर आता है तो -1 +1 पे तो सेम वैल्यूज आ जाती हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट 0 पे आपको एक और वैल्यू मिलेगी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। आपने एक दफा क्या करना है, साइन वाली जो टर्म है उस पूरे को आपने क्या करना है, आपने 1 इनपुट कर देना है। अगर उसका 1 इनपुट कर देते हो, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दैट? यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 34 into 1 whole square and that gives you 34। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। यानी जब साइन जो है वो 1 होगा तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन 34 के इक्वल होएगा। फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर वाले केस के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि हमेशा ये सेम ही आएगा, बट इफ यू जस्ट गोइंग टू यूज द स्टैंडर्ड मेथड, आप इसको भी चेक कर लो। -1 आप इनपुट करके देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 34 into -1, ये भी आप करोगे, इट्स स्टिल गेट 34 फ्रॉम दैट। एक वैल्यू तो हमारे पास 34 आ रही है,
ठीक है। अब दूसरी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी जब आप इसको 0 के इक्वल कर दोगे, ठीक है। what is that going to give you? Square root of 34 into 0 whole square, and that gives you 0. अब तीनों में से आपने देख लेना जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप मैक्सिमम कह दें, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप मिनिमम कह दें. So you'll say the greatest possible value that you've got here for this function, that is 34, and the least possible value of this function is 0. तो basically आपको सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट्स पे चेक कर लेना होता है. साइन या कॉल्स हो, आपने -1 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है. Of course, given that they are part of the domain, कि आपकी डोमेन के अंदर वो वैल्यूज आ सकती हैं साइन और कॉल्स की, आपने इन वैल्यूज पे बस चेक कर लेना है और देखना है आपके फंक्शन के क्या वैल्यूज आते हैं, ठीक है. So this is what we get. ये आपके पास greatest least values आ गए. Okay, let's move on. Question number 3 is relatively easier. It's simple product rule, and then you can do the second derivative, find whether it's maximum minimum. हो जाएगा. Let's do the next one. Question number 4 from this. We have to use a substitution here. Using the substitution, u equals square root of x, find the exact value of this expression. अच्छा, वैसे तो ये simple substitution है, इसमें एक चीज different है, वो क्या है कि limit आपकी एक infinity आ गई, right? So we've got to be a bit careful about that, कि infinity के साथ कैसे deal करेंगे. Otherwise, it's relatively straightforward. Okay, substitution दी हुई है तो आपने वही substitution use करनी है. What's the substitution? It's u equals square root of x. अच्छा, जब ये substitution आपको दी होती है, आपको क्या करना होता है, आपको du over dx भी find कर लेना होता है. तो इसको पहले पावर फॉर्म में लिख लें, u equals x raised to power 1 over 2, and that gives you du over dx. That's half x minus 1 raised to x raised to power minus 1 over 2. Okay, this is what we get. This is the derivative du over dx. Now let's see whether we can apply limits here. Let me just see कि हमारे पास space कितनी है. Okay, we don't have a lot of space. Okay, so हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब substitute कर देंगे. कैसे substitute करें? x की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? If u is square root of x, x क्या आएगा? यहाँ पे लिख लें, u square will be x. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ सकता है? We can have u square plus 1. x की जगह पे u square डाल दिया, square root of x की जगह पे u डाल दिया, and now we've got to replace dx as well. ठीक है, अब उसका एक तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ से dx को सब्जेक्ट बना लें, ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है इसमें से dx को सब्जेक्ट बना लें. How are we going to do that? du over, or let's do it this way, ये 2 आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, so it becomes 2 du. x raised to power minus 1 over 2 है यहाँ पे, when it goes on the left side it's going to become x raised to power 1 over 2. You can write that here as well. 2x raised to power 1 over 2 मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ गया, and on the right side I have dx. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो dx लिखा हुआ था, instead of dx I can write 2x raised to power 1 over 2 du. ठीक है, this is what I can write there. But when we are doing the substitution, what we want is, we want everything to be converted to that substituted variable. हमारे पास यहाँ पे तो u आ गए हैं सारे. The problem is we still have an x here. यहाँ पे हमारे पास दोबारा से x आ गया है, क्योंकि वो dx के से आ रहा था. अब इस x को आप दोबारा से replace कर सकते हो, because this is again the same thing. This is x raised to power 1 over 2. x raised to power 1 over 2 को हम क्या लिख सकते हैं? We can write it as u. तो इसको हम u में convert कर देंगे. And that basically gives us 1 over u square plus 1 into u in the denominator. In the numerator, we've got 2 times u into du. इसको integrate करना है. u cancel हो गए, and what are we left with then? We're left with 2 over 1 plus u square du. That's the integral that you've got to do. अभी limits को देखते हैं बाद में. ये हमारे पास integral आ गया. Now, how do we integrate this thing? What form does it look like? 1 over or 2 over 1 plus u square. Does that remind you of something? Have we done any integration like this? जहाँ पे denominator में हमारे पास 1 plus u square आ रहा है और numerator में constant है.
This is the tan inverse वाली form, right? Constant over this form, ये सीधी tan inverse बन जाती है. So basically अगर आप 2 को बाहर लिख दो, it becomes 1 over 1 plus u square du. This is exactly the tan inverse form. This is going to become 2 tan inverse of u. This is your integral. ठीक है, अब हमें देखना है कि लिमिट्स क्या इनपुट करनी है. लिमिट्स जो आपको दी हुई थी 3 से लेकर इंफिनिटी तक, those limits were for x, those limits were not for u. अब वो लिमिट्स डायरेक्टली इनपुट नहीं कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको u की लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं वो भी. When x equals 3, what about u? U is going to be square root of x. That's going to be square root of 3. 3 वाली लिमिट square root of 3 बन जाएगी. When x equals infinity, what about u? Square root of infinity, what's that? Infinity का square root कर दें. That's still infinity, right? Infinity and square root of an extremely large number, that's still an extremely large number. ये हमारी upper limit फिर भी infinity रहेगी. ठीक है, तो हम लिमिट्स जब इनपुट करेंगे यहाँ पे, वो क्या लिमिट्स इनपुट करेंगे? We will be inputting square root of 3 to infinity. ये लिमिट्स हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे. ठीक है, square root of 3 is the lower limit, upper limit is infinity. Now, what do we get from this? हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 2 into tan inverse of infinity minus 2 into tan inverse of square root of 3. This is what we end up getting. अब क्या करें? Tan inverse of infinity. What's that? Let's hold that for a moment. Tan inverse of square root of 3 find कर लेते हैं. Let's evaluate this. Tan inverse of square root 3 तो हम calculator से कर सकते हैं. Calculator से हम कर लें tan inverse of square root of 3. Remember, we are dealing in radians. Paper 3 के अंदर trigonometry के अलावा और vectors के अलावा आपने कभी degrees नहीं use करना. You have to stay in radians. Tan inverse of square root of 3, that gives me pi over 3. So this is pi over 3. ये तो आपके पास pi over 3 आ गया. 2 into pi over 3. Okay. Now the problem is, what about this first thing? इसको क्या करेंगे? Tan inverse of infinity. Now think about this. इसको इस तरह से देख लेते हैं. हमें इसकी वैल्यू नहीं पता ये क्या है. इसकी वैल्यू नहीं पता. ठीक है, इसको हम कुछ सपोज कर लें. Let's say this is I don't know, x equals tan inverse of infinity. So we're basically saying tan x equals infinity. किस एंगल का tan infinite हो जाता है? Remember the tan graph. ये आपको calculator से नहीं मिलेगा. Calculator is not going to give you this value. So you have to have your graphs concept strong. आपको पता होना चाहिए tan infinity कहाँ पे होता है. Remember the graph of tan? 0 से ऊपर जाता है इस तरह से. pi over 2 पे जाके it's basically going towards infinity. Right? Pi over 2 पे जाके it's going towards infinity. So the angle that you've got here, that is pi over 2. Where is 1 coming from, Fazan? It should be pi over 2, right? 90 पे जाके वो हो रहा होता है ना? Okay. So that's what we do. हम कहेंगे tan inverse of infinity, यानी tan की value infinity कब होती है? Pi over 2 पे जाके. वो यहाँ पे input कर दें. And now you evaluate this, you get pi minus 2 pi over 3, and that gives you pi over 3. And that's the final result. That's the value of this integral that we were looking for. Does that make sense? Yeah, but not 90. We have to write our angles in radians. We never use degrees in any topic in paper 3 apart from trigonometry and vectors. Okay, radians mein rakhna. So that's what we get. That's our question number 4. Let's move on. Question number 5 is relatively easier. It's simple trigonometry. You should be able to do this. Let's move on to the next one. Question number 6. Okay, now it's
yeah, it looks like a binomial question, but it's slightly different from the usual binomial questions that we get on paper 3. Let's see what we're going to do with this. So we have a plus bx into 1 plus 4x का square root. We can write this in power form. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a plus bx into 1 plus 4x whole raised to power 1 over 2. Right? इसको power form में लिखते हैं. We are given that a and b are constants. When this is expanded in ascending powers of x, the coefficients of x and x square are given. X का coefficient 3 है और x square का coefficient -6 है. अच्छा, I think it's not that difficult really, but let's do this quickly. ये हम find करनी है a और b की values. What do? We have to expand this thing. 1 plus 4x whole raised to power 1 over 2. ये expand करना है. Yes, Hashim, that's a very good idea. So if you don't understand it that well, infinity concept, that's a hack that we have. Tan inverse of infinity. अगर आपको ग्राफ से नहीं समझ आ रहा, आप क्या करें, बहुत ही बड़ी वैल्यू डाल दें कैलकुलेटर के ऊपर. So like you said, tan inverse of, input anything like this, 10 raised to power 50. Input an extremely large value. उससे आपको idea हो जाएगा कैलकुलेटर जो वैल्यू देगा. For example, if I were to input this in my calculator, tan inverse of 10 raised to power 50. I hope it doesn't give me an error. Let's just try 10 raised to power 50. Even input kiya calculator ke andar, it's actually giving me pi over 2. Although it's not exactly pi over 2, but calculator approximate value jo mujhe de raha hai wo pi over 2 de raha hai. Right? So that's a hack that you can use in an exam. Infinity की जगह पे आप बहुत बड़ा नंबर डाल दें और आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या होना चाहिए. ठीक है? Yeah, so that's what you can do here. Tan inverse of infinity की जगह पे आप बड़ा नंबर डाल सकते हो, ठीक? Infinity की जगह पे. That's good. Okay. Acha, let's look at question number 6 here. A plus bx into 1 plus 4x whole raised to power 1 over 2. Now, we have to expand this thing. ये binomial expansion है, power fraction है आपकी. तो ये P3 वाला binomial formula हमारे पास होता है, वो यहाँ पे use करना होगा. I'm going to write that formula on the side here. क्या formula होता था? 1 plus x whole raised to power n. That equals 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial x cube and so on. This is the formula that you're given in the formula sheet. Yeah, I'll actually have the formula sheet here somewhere as well. I'll just show that to you. ये formula sheet में आपको ये दिया होता है. It's right here. This one. ठीक है? This is what we're using. Paper 3 में ये वाला formula use करते हैं. क्योंकि यहाँ पे n जो है, it can be anything other than an integer as well. तो यहाँ पे integer नहीं है, तो यही formula use कर सकते हैं सिर्फ. या इसमें values input करनी है सिर्फ इसकी expansion के लिए 1 plus 4x whole raised to power 1 over 2 के लिए. Now the problem is कितना expand करें. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x का coefficient और x square का coefficient, right? तो हमें सिर्फ x square तक expand करना है, आगे जाने की जरूरत नहीं है. इसकी expansion कर लेते हैं पहले अलग से. 1 plus 4x whole raised to power 1 over 2. ये फॉर्म है आपके पास ऑलरेडी. It's going to be 1 plus n. मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ. x की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है? 4x आ रहा है. n की जगह पे क्या आ रहा है? 1 over 2 आ रहा है. So 1 plus n times x, n is 1 over 2 into x की जगह पे मेरे पास 4x आ रहा है. ठीक है? Plus n, you see n into n minus 1, that's going to be 1 over 2 minus 1 divided by 2 factorial, which is just 2, into x square. अब x square नहीं करना, सिर्फ x की जगह पे क्या आ रहा है? x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे 4x आ रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 4x and square of that. And that's it. We don't need to expand any further. हमें x square तक term चाहिए थी, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं. And now we just simplify this. 1 plus 2x plus half into minus half divided by 2. ये पूरा calculator में डाल सकते हैं, but be careful about the brackets there when you do this. 4x square का whole square वो आ जाएगा 16x square. Evaluate this and see what the third term there turns out to be. Minus what?
16/8 हो जाएगा. I think it's going to be 2x² minus 2x². Is that what it is? Walaikum assalam, Ibrahim. Can someone confirm this? ये याद है? Okay. So this is the third term that we're getting. ठीक है, हम x² तक expand कर लिया. Now let's multiply it with that original form जो हमने पहले expansion करनी थी. उस पे जाके input कर देते हैं. a plus bx into 1 plus 2x minus 2x². Now what are we interested in? We are interested in the coefficients of x and x². ठीक है, पूरा expand कर लेते हैं. It's not going to be a lot of hassle. a plus 2ax minus 2ax² plus bx plus 2bx² minus 2bx³. Now what do we need? We need the terms in x. X वाली terms कौन सी हैं? We've got this term, we've got this term. We don't need the terms in x². We've got this and we've got this. ये terms हमें चाहिए. x का coefficient क्या आ गया? 2ax plus bx. That's going to be 2a plus b whole into x. ये आपका x का coefficient हो गया. What about the coefficient of x²? That's minus 2a plus 2b. That is the coefficient of x². बाकी सब हम ignore करें. अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे x का coefficient उसने कहा था क्या होना चाहिए? It should be 3. इसको 3 से equate कर देंगे. ठीक है? x² का coefficient क्या होना चाहिए? We were given that it should have been minus x. So we will equate this to minus 6. We'll get two equations. We will have 2a plus b equals 3. And we'll have minus 2a plus 2b equals minus 6. Now we can solve these equations and find the values of a and b. ठीक है, आप किसी भी method से कर सकते हैं, substitution से कर लें, elimination से कर लें, whatever you prefer. And you'll get the result. So in this case, you have 2a plus b equals 3 minus 2a plus 2b equals minus 6. I'm just going to add these two equations. What do I get from this? I get 3b equals minus 3. The value of b that I get from this is minus 1. And then I can find a as well. First equation, अगर मैं input कर दूं, that gives me 2a minus 1 equals 3 and a equals 2. So I've got a equals 2 and b equals minus 1. ये मेरे पास a और b की values are. ठीक है? So this was this binomial question number 6 from this paper. ठीक है? So that's what you do in this case. Walaikum assalam, Khalid. So that's what we are getting. A equals 2 and b equals minus 1. Let's move on to the next one. Next, we've got question number 7. Now, again, it's a slightly different differentiation. We are given that y equals ln of x. Log के अंदर एक और log है. Okay, that's what you want to differentiate. Log के अंदर एक और log आ रहा है, इसको हमें differentiate करना. Now, how do we do this? Remember, differentiation हम करते हैं, we start from the outermost function. We start from the outermost function. Now, what's the outermost function? ये हमारा बाहर वाला log है, इसको differentiate करते हैं. ln की इंटीग्रेशन क्या होती है? फिर remember, ln की इंटीग्रेशन होती है 1 over x, है ना? अच्छा, so basically अंदर जो भी आ रहा होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So we say dy over dx is going to be 1 over this thing that is inside the brackets, that is ln of x. ठीक है? और फिर क्या करना होता है? ये जो अंदर आ रहा होता है ब्रैकेट के, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है. ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? ln x का डेरिवेटिव होता है 1 over x. So we multiply by 1 over x. And what do we get from that? We get 1 over x ln x. Now, this is a question in which you are required to show this derivative. उसने आंसर आपको बताया हुआ already. So it's necessary to show it as two separate terms like this, separate expressions like this, and then multiply them. Otherwise, final answer तो आपको पास already पता है. तो इसको one line में सीधा आंसर नहीं लिखना, उसका मार्क नहीं मिलेगा आपको. You'll show them separately कि आपने पहले 1 over ln x किया है, फिर उसको multiply किया है 1 over x के साथ, and then that gives you 1 over x ln x. फिर ये आपके पास derivative आ गया.
Okay, let's look at the next part. Now this is a differential equation. The variables x and t satisfy this differential equation. X ln x plus t dx over dt equals 0. It is given that x equals e when t equals 2. एक point आपको दिया हुआ है. We have to solve this differential equation, obtaining an expression for x in terms of t. X subject होना चाहिए, t के terms में आपका answer होना चाहिए. We have to simplify our expression as much as we can. Okay. Now, how do we solve differential equations? We have to first separate the variables. Variables को separate करना है. अब ये dx जहाँ पे numerator में आ रहा है, dx आपके पास left side पे numerator में है, left side पे सारी x terms रखेंगे और t terms को हम right side पे ले जाएंगे. ठीक है? Now, how do we separate the variables here? Let's think about this. अच्छा, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम dt से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? इसको dt से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इससे क्या होता है, we get x ln x dt plus t dx equals 0. अब dt को राइट साइड पे ले जाते हैं. What does that give us? That gives us t dx equals minus x ln x dt. ठीक है? This is what we are getting. Now, we can take the x terms to the left side, t terms to the right side, x ln x को left side के ऊपर ले आए. What does that give us? That gives us minus 1 over x ln x into dx, and that equals 1 over t dt. ये आपने variables को separate कर दिया. ठीक है? So that's the first thing that you start with when you're solving differential equations. x वाली terms एक side के ऊपर और एक variable एक side के ऊपर, दूसरा variable दूसरी side के ऊपर. That gets you 1 mark. Separating the variables always gets you 1 mark in differential equations, right? Okay, so that's what you start with. Separate कर लिया. Now you integrate both sides. Left side को integrate कर दिया, right side को integrate कर दिया. Of course, left side पे we've got dx, so इसको हम with respect to x integrate करेंगे. Right side पे we've got dt, इसको with respect to t integrate करेंगे. अच्छा, right side is relatively straightforward. Why? Because we just have 1 over t there. 1 over t का integral क्या होता है? With respect to t, it's going to be ln of t. Right? That's pretty straightforward. यहीं पे हम constant भी लगा देते हैं साथ. Right side तो हमारे पास होगी. ठीक है? Now, what do we do with this integral? 1 over x ln x, इसको हमने integrate करना है. Now, if you think about it, we don't really have a direct method of doing this. Fraction है, fraction में हम क्या करते होते थे normally? Can we use the log method here? Denominator का derivative numerator में है, हमारे पास नहीं है, तो वो तो नहीं apply होता. Tan inverse वाली form है, वो भी नहीं है. Partial fractions के क्या करेंगे, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा. So what do we do then? Any quick ideas on this? क्या करें? आपको डायरेक्टली तो इसको इंटीग्रेट करना नहीं आता इस फंक्शन को, but if you think about it, what have we just done in the previous part? उसने आपसे कोई चीज प्रूव करवाई है फर्स्ट पार्ट के अंदर. उसने क्या कराया है? उसने कहा है अगर आपके पास कोई फंक्शन हो ln of ln x, इसका जो डेरिवेटिव होता है that is 1 over x ln x. Isn't that exactly what you're getting here? 1 over x ln x. तो बेसिकली इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी वापस. ओके, तो इसको आपको खुद करने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली दानियाल, सो दैट्स गुड. आपको करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्ट को आपने डायरेक्टली यूज करना है, बस नेगेटिव साइन को बाहर लिख दें बिकॉज ऊपर नेगेटिव नहीं था, तो माइनस को उठा के हम बाहर लिख देते हैं. लेट मी जस्ट डू इट इन दिस स्टेप. माइनस को बाहर लिख देते हैं. अब जो अंदर वाले पार्ट का इंटीग्रल है दैट इज माइनस ln of ln x. दैट्स द इंटीग्रेशन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को इवैल्यूएट करना है. We've got a point x equals e when t equals 2. Let's input that. x equals e, t equals 2. ये यहाँ पे input कर देते हैं. Hashim, it would have been very difficult by parts because parts by parts आप क्या करते? 1 over x आता और मतलब you would have
x raised to power -1 and then ln x whole raised to power -1, ये सिंप्लीफाई होना ही नहीं था, राइट? आप किसको u लेते, किसको dv over dx लेते, वो सिंप्लीफिकेशन आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स आप करते रहते, इट वुड नॉट हैव सिंप्लीफाइड। ओके, सब्स्टिट्यूशन खालिद जब भी आपको यूज करनी होती है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। ए लेवल के सिलेबस के अंदर सब्स्टिट्यूशन आपको जब भी करनी होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर दी होगी, ठीक है? तो if you are not given a substitution, most likely there's going to be another more efficient way of doing this, ठीक है? Okay, अच्छा, let's do this now. Let's input these values. X की value e input कर दें, minus ln of ln e that equals ln of 2 plus c. ln e क्या होता है? 1, so we get minus ln of 1 equals ln 2 plus c. ln 1 is 0. 0 minus ln 2 equals c. c की वैल्यू हमारे पास minus ln 2 आ गई, ठीक है? So now, yeah, so we have some space. Now the equation that we're getting is going to look like this: minus ln of ln x that equals ln of t minus ln 2. c की जगह पे हमने ln 2 minus ln 2 डाल दिया. Now this is the solved differential equation. आपने differential equation solve कर लिया इस point के ऊपर, ठीक है? अगर उसने सिर्फ solve करने के लिए कहा होता, this would have been your final result. But you need a specific form in your final answer, and that is x in terms of t. x को आपने subject बनाना है, x को subject बनाना है और फिर आपको simplify भी करना है अपने answer को. So how do you make x the subject now? How do you make x the subject now? आपने logs को remove करना है किसी तरह से, ठीक है? logs को कैसे remove करें? लेफ्ट साइड पे माइनस आ रहा है, इसको as it is भी रहने दे सकते हैं, but let's have to take that negative to the right side. ln of ln x that equals ln 2 minus ln t. पूरे इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि लेफ्ट साइड से हमारा लॉग खत्म हो जाए. हमें करना क्या है, इस x को हमें किसी तरह से बाहर निकालना है. ये जो x अंदर आ रहे हैं हमारे पास, इस x को किसी तरह से बाहर सब्जेक्ट बनाना है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, we know that the base of ln is e here. We've got the base of ln as e here. We can take that to the other side. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln x that equals e raised to power ln 2 minus ln t. That's the first thing that we do here. ठीक है, so we are getting ln x equals e raised to power ln 2 minus ln t. And then what do we do at this step now? We can again apply the same rule again. Okay, इसकी बेस पे ये है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं. But now let's stop at this point. उसने मैं क्या कहा था, उसने मैं कहा था आपने सिंप्लीफाई करना है अपने आंसर को. अब देखते हैं राइट साइड को पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर कि थोड़ा सा आंसर हमारा जो है इससे बेहतर फॉर्म के अंदर आ जाए. Let's break it down. I'm going to do that here. ln x equals e raised to power ln 2 divided by e raised to power ln t. Can I write it like this? ये नेगेटिव पावर है ना, तो उसको मैं चलिए एक स्टेप और कर लेता हूँ यहाँ पे. I can do ln x equals e raised to power ln 2 multiplied by e raised to power minus ln t. So I can break it down like this first, and then this thing can go to the denominator, and we get something like this. Now remember, e and log, they are inverse functions. ये एक दूसरे को opposite होते हैं. आप ये कैलकुलेटर भी ट्राई कर सकते हैं. e raised to power ln 2, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, ये आपको 2 रिजल्ट देगा, बिकॉज e और log एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं. दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. आपका रिजल्ट 2 आ जाता है. सिमिलरली अगर आपके पास कहीं पे होता ln of e raised to power 2, ये तो आपको पता है ये 2 यहाँ पर आ जाता है, वो 2 ही बन जाता है, बट यू कैन जस्ट यूज द इनवर्स लॉजिक हियर एज वेल. log and then e, they are inverse of each other. What are you left with? You're left with 2. तो e raised to power ln 2 जो है ना, ये हमारे पास 2 आ जाएगा. Now let me just write down the general form here so that you remember that. e raised to power ln of something हो ना आपके पास, e raised to power ln x, that's always the same thing as x, because e और ln एक दूसरे का inverse होते हैं, आपके पास x बच जाते हैं.
So what do you get from this? You get ln x equals 2 over t from this. So that's much simpler, right? Because ये e और ln एक दूसरे से cancel out कर देंगे, ये e ln एक दूसरे को cancel out कर देंगे, we're left with 2 over t there. ठीक है? And now we can take this base here to the other side again, and we get x equals e raised to power 2 over t from this. And that's our final result. That's x in terms of t. And that's in a simplified form. अच्छा, अगर आप ये सब कुछ नहीं करते और आप इसको let's say इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे x equals e raised to power ln 2 minus ln t. इस स्टेप से आगे, well, that's correct, but that's not in the simplified form. तो आपको इसका 1 mark शायद नहीं मिलता. You would still get 6 marks for this. ठीक है? 6 or at least 5 तो मिलेंगे, but maybe 6. I'm not sure about the 6, but at least 5 you'll get. लेकिन इसको simplify करके लिखेंगे इस तरह से, तो फिर आपको full marks मिलेंगे. ठीक है? All right. So that's what we have. That was question number 7. Again, इसका last part was a bit tricky. जो हमने इसको change किया उस form के अंदर. Khalid, that's absolutely correct. If you look at the syllabus document, you are explicitly given there that that candidates are only expected to use a given substitution to do integration. So whenever you are supposed to use substitution, you will always be given that substitution. हमेशा वो बताएगा आपको. ठीक है? अगर substitution उसने नहीं बताई, that means there is always going to be another method of doing that. So generally how I teach is, I say whenever you've got a product, दो चीजें multiply हो रही हैं, let's say you've got one expression and another expression, ये multiply हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, integration में दो ही methods होते हैं आपके पास, या integration by parts या substitution, right? Substitution होगी तो उसने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो वो integration by parts ही है. That's the only option you've got for a product in your syllabus. ठीक है? Product के लिए हम वही कर सकते हैं essentially. ठीक है? Okay, let's move on. Now it says, hence state what happens to the value of x as t tends to infinity. Okay, हमारे पास ये क्या value आ गई थी ऊपर? We were getting x equals e raised to power 2 over t. ये आ रहा था ना? X equals e raised to power 2 over t. Okay, now let's think about this. What happens as t goes to infinity? Again, यहाँ पे सिर्फ आंसर का मार्क होता है, तो आपको इसकी वर्किंग को शो करना जरूरी नहीं है. You can think about what happens when you've got a very large number here in the denominator, or again you can use that trick that we just talked about earlier. t की जगह पे कोई बहुत बड़ा नंबर डाल दें और कैलकुलेटर में डाल दें. तो कैलकुलेटर में आप क्या डालेंगे? 2 over an extremely large number, so you can say 99999, add as many 9s as you want and see what that gives you. Okay, so or you can say 2 over 10 raised to power 10. ये आप कैलकुलेटर में डाल दें and see what you get. I'm going to try that on my calculator and see what I get. E raised to power where's e raised to power 2 divided by 10 raised to power 10, so that's almost going to be 0. So ये मेरे पास approximately आ जाएगा e raised to power 0. e raised to power 0 क्या होगा? वो 1 आ जाएगा. Your final answer is going to be 1 here, right? You can think of it logically as well. किस तरह से आप कहोगे t बहुत बड़ा हो जाता है, denominator बहुत बड़ा हो जाता है, तो 2 over t क्या होगा? 2 over an extremely large number, it's going to be approximately 0. ये 0 के आसपास हो जाएगा power. e raised to power 0 पर आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा. Or you can use this trick, आप बड़ा number डाल दें, कोई बहुत बड़ा denominator t की जगह पे, you will get 1 from that from the calculator directly. All right. Okay, let's move on. Question number 8. We again have integration. Okay, the constant a is such that integral of ln x divided by square root of x dx equals 6. This is what we are given. We need to show that a equals this thing. अच्छा, ये notation आपको पता होनी चाहिए.
अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है y equals exponent of x, that's the same thing as saying y equals e raised to power x, right? E raised to power x को लिखने का एक और तरीका ये भी होता है exp and then bracket में you've got that thing. E raised to power x here, so it's not something that's entirely new. Okay, अच्छा. Now how do we show this thing? इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करें? आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स इनपुट करनी है और उसको 6 से इक्वेट कर देना. ठीक है. Now how do we integrate this thing? ln x over square root of x. How do we integrate this? Now again it's a fraction. Let me write that here. ln x over square root of x, it's a fraction. Fraction के लिए हमारे पास क्या methods होते हैं? We can either use log rule, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हमारे पास न्यूमरेटर में है? नहीं है, और ना ही आ सकता है किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके. tan इनवर्स लग सकता है? नहीं लग सकता. पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकती है? नहीं हो सकती. जब तीनों ये चीजें नहीं हो सकती तो अब चौथी चीज आपके पास क्या होती है? यू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ. ठीक है, इसको प्रोडक्ट बना दें और फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज कर लें. हाउ डू यू मेक इट अ प्रोडक्ट? यू से ln x मल्टीप्लाइड बाय x रेज्ड टू पावर 1/2. ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया. You can use integration by parts here now. ठीक है. Now there are two ways of doing this. आपने u वाला फॉर्मूला किया होगा, u dv over dx वाला फॉर्मूला यूज किया होगा. I generally use the one that's given in the formula sheet ताकि you can refer to that if you forget. This is what you're given in the formula sheet. u dv over dx. इसका integral is equal to uv minus integral of v du over dx with respect to x. This is the formula that you've got in the formula sheet. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? आपने चूज करना है कि u क्या लेना है आपने और आपने dv over dx क्या लेना है. ठीक है, इसके लिए वी गॉट दिस थंब रूल. हमने पिछले पेपर 3 में भी किया था. I8 जो लेफ्ट पे आ रहा होगा उसको आपने u लेना है, जो राइट पे आ रहा होगा उसको आपने dv over dx लेना है. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, a is algebraic, x की टर्म्स में कुछ x पोलिनोमियल कोई, t is trigonometric, sin cos tan, e is exponential. जो फंक्शन लेफ्ट पे आएगा उसको आपने u लेना है, जो राइट पे आएगा उसको आपने dv over dx लेना है. So what functions do we have here? We've got log function and we've got algebraic function. ठीक है, तो algebraic function को हम क्या करेंगे? उसको हम dv over dx ले लेंगे क्योंकि वो राइट साइड पे आ रहा है. log function को हम u ले लेंगे. I'm going to write that here as well. I'm taking this as u and this as dv over dx. इंटीग्रेशन में पार्ट्स में यही आपका मेन डिसीजन होता है कि किसको आपने u लेना है, किसको आपने dv over dx लेना है. ओके. Oh yeah, sorry about that. I missed that. So ये मैं square root of x को जब ऊपर लेके गया हूँ, this should have become -1/2. Yes. So thank you for that correction. So this should have been x raised to power -1/2. Okay. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. फॉर्मूला में बस वैल्यूज इनपुट करनी है. हम साइड पे लिख लेते हैं, दैट हेल्प्स समटाइम्स. हम लिख लेते हैं हमारे पास u क्या था? u was ln x. हमें du over dx चाहिए होगा, वो इवैल्यूएट कर लें. du over dx, what's that? That's it. That's 1/x. ठीक है, और हमारे पास क्या है? dv over dx गिवन है, that is x raised to power -1/2. हमें v भी चाहिए होगा कहीं पे. इसको इंटीग्रेट कर लें, x raised to power -1/2 को इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? x raised to power -1/2 plus 1, पावर में 1 ऐड कर दें, that becomes 1/2. divide by that increased power, 1/2 से डिवाइड कर दें. So v equals 2x raised to power 1/2. ये हमने evaluate कर लिया जो हमें चीजें चाहिए होंगी फॉर्मूला में इनपुट करने के लिए. अब बस इनपुट कर दें u times v. I'm going to write that here again. uv minus integral of v du over dx. सिर्फ आपने वैल्यूज उठा के इसमें इनपुट करनी है. u is ln x. v हमने साइड पे evaluate किया है 2x raised to power 1/2.
minus integral of v is 2x raised to power 1 over 2 into du over dx is 1 over x dx. ये आ गया हमारे पास. Let's simplify this further. We've got 2x raised to power 1 over 2 into ln x. ये हमारे पास बाहर है. Minus 2x raised to power minus 1 over 2. How do we get that? This power is 1 over 2. नीचे 1 है. 1 over 2 minus 1. That's going to give us minus 1 over 2. अब इसको हमें integrate करना है. ठीक है. अब this is simple algebraic expression. इसको integrate कर लें directly. 2 तो constant है, वो वैसे ही रहेगा. x raised to power minus 1 over 2 को integrate कर लेते हैं. So we have 2x raised to power 1 over 2 ln x minus 2 increase the power by 1 x raised to power minus 1 over 2 plus 1 हो जाएगा. So it becomes 1 over 2 divide by 1 over 2. That's your integration. अब इस पॉइंट पे जाके हम लिमिट्स इनपुट कर देते हैं. लिमिट्स क्या इनपुट करनी थी? a से लेकर 1 से लेकर a तक, और इसको 6 से इक्वेट कर दें. Input the limits 1 to a and equate that thing to 6. ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन दी हुई थी. अब हमें ये शो करना है कि this becomes this thing. Okay, now let's try to show that. Limits input करें, but before we input the limits इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं. 2x raised to power 1 over 2 ln x. ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2 से multiply हो जाएगा. It becomes minus 4x raised to power 1 over 2. And again the limits are from 1 to a. Okay, अब एक दफा a input कर दें, एक दफा 1 input कर दें, and simplify and see what you get from that. ठीक है, so that's what we're going to do now. 2a raised to power 1 over 2 ln a, x की जगह पे a आ गया, minus 4a raised to power 1 over 2. Subtract from that the case when we input 1. 1 input कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ln 1 minus 4, and that equals 6. ठीक है, let's simplify this thing now. We are getting 2a raised to power 1 over 2 ln a minus 4a raised to power 1 over 2 minus 2 ln 1. to ln 1 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, plus 4, and that equals 6. ठीक है. अच्छा, हम देखते हैं हमें चाहिए क्या एंड पे. हमें a को सब्जेक्ट बनाना है. अच्छा, a को सब्जेक्ट नहीं बनाना, एक a लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और बाकी सब कुछ राइट पे आ जाएगा, और यहाँ पे e पावर भी आ रही है. e पावर तो हमारे पास अभी नहीं आ रही यहाँ पे कहीं पे, तो होगा क्या, बेसिकली लॉग नहीं आ रहा ऊपर, है ना, लॉग नहीं आ रहा. तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, उसने लेफ्ट साइड पे लॉग वाली टर्म रखी होगी, राइट साइड पे बाकी सब कुछ आ गया होगा, और फिर वो e को दूसरी साइड पे लेके जाके ये वाली फॉर्म बन चुकी होगी. तो हम इसको इसमें क्या करेंगे, लॉग वाली टर्म को एक साइड पे रख लें, ln a को एक साइड पे रख लें, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाएं. राइट, सो वी आर बेसिकली लुकिंग एट व्हाट वी वांट टू गेट एट द एंड. हमें ये फॉर्म चाहिए ना एंड पे, उसको देखते हुए हमें उसने क्या किया हुआ है, लॉग वाली टर्म को एक साइड पे रख लिया. सो लेट्स डू दैट. 2a raised to power 1 over 2 ln a, इसको एक साइड पे रख लें. टेक एवरीथिंग एल्स टू द लेफ्ट साइड, टू द राइट साइड. 6 minus 4 is 2 plus 4a raised to power 1 over 2. इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखते हैं. Now let's divide a raised to power 1 over 2 on the other side and 2 as well. ये पूरा जाके डिवाइड कर दें वहां पे. क्या बन गया हमारे पास, ln a equals 2 over 2a raised to power 1 over 2 plus 4a raised to power 1 over 2 divided by 2a raised to power 1 over 2. What does that give us? 2 into it cancelled, 4 into it cancelled, ये 2 आ गया, ये भी cancel हो गया. Now we've got exactly that form. ln a equals 1 over a raised to power 1 over 2. 1 over a raised to power 1 over 2 वो स्क्वायर रूट फॉर्म में रखा हुआ है, उसको स्क्वायर रूट में कर देते हैं. 1 over square root of a plus 2. That's what we've got. ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है, जो लेफ्ट वाला ln a है, इसमें जो e बेस है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, and it becomes a equals e raised to power 1 over square root of a plus 2. ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, वो एक्सपोनेंट वाली फॉर्म के अंदर we can say exponent 1 over square root of a plus 2.
ये उसी की डिफरेंट नोटेशन है, ई पावर समथिंग में लिखा हो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव देयर. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग. ये हमारा ये पार्ट हो गया. Let's look at the next part. Next part is relatively straightforward. I'll just give you a hint for that. इसने कहा verify by calculation that A lies between 9 and 11. जब आपको इस तरह कुछ करना होता है तो क्या करते हैं आप? ये करते हैं कि सारी चीजें लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, सारी टर्म्स लेफ्ट एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी साइड पे सिर्फ जीरो होता है. एज इट इज इनपुट नहीं करना. पहले आपको क्या करना पड़ेगा? you'll have to take everything to one side. So you can say A minus e power 1 over square root of A plus 2 equals 0. इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, सब चीजें लेफ्ट पे ले आए, राइट साइड पे 0 आ गया. अब हम क्या कहेंगे? लेट्स कॉल दिस थिंग f of x. आपने क्या करना है? आपने इवैल्यूएट करना है f of 9. f of x नहीं है, सॉरी, f of a बन गया. ओके, यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल जो है वो a आ रहा है तो उसको a लिखते हैं, एक ही बात है. f of 9 इवैल्यूएट कर लें, यानी कि आप एक दफा 9 माइनस e रेज टू पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 इवैल्यूएट करें, you'll get some value from this. एक दफा f of 11 इवैल्यूएट कर लें, you'll get some value from this as well. 11 minus e raised to power 1 over square root of 11 plus 2. एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, फिर आप लिख दोगे since the sign is changing a root lies between 9 and 11. वो स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, ठीक है? या आपके पास एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, आप लिखोगे since the sign is changing there's a root that lies between 9 and 11. वो लिखना जरूरी होगा यहाँ पे, ठीक है? Since there's a sign change, A lies between 9 and 11. ठीक है, ये आपके पास ही हो गया. ये आप इवैल्यूएट कर लें, देख लें क्या आता है. आई एम नॉट इवैल्यूएटिंग दिस हियर. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट आइटरेटिव फॉर्मूला यूज करना है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. उसने कहा बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन यूज एन आइटरेटिव फॉर्मूला. आइटरेटिव फॉर्मूला आपने खुद बनाना है तो क्या करते हैं आप? एक वेरिएबल एक साइड पे ले जाते हैं, बाकी सब कुछ राइट पे ले जाते हैं. इट इज दैट फॉर्म ऑलरेडी. एक ए लेफ्ट साइड के ऊपर है, एक ए लेफ्ट साइड के ऊपर है, बाकी सब कुछ राइट साइड के ऊपर है. e रेज टू पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1. इससे आइटरेटिव फॉर्मूला कैसे बनेगा? लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है? n प्लस 1 लगा देना. राइट साइड पे क्या करना है? a के साथ n लगा देना. ठीक है, ये आप इवैल्यूएट कर लेंगे. अब इसके आगे स्टार्ट क्या करेंगे? 9 और 11 के दरमियान में आपने प्रूव किया ना रूट है. सो द स्टार्टिंग नंबर दैट यू टेक कुड बी 10. इनका मिड पॉइंट ले लें 9 और 11 का. आप कहेंगे a1 जो है दैट इज 10. इससे स्टार्ट करें, फाइंड कर लें सारी आइटरेशंस, you'll get the value. कैलकुलेटर में डालें, you know how to do that. Make sure आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. Each iteration to 4 decimal places. 4th decimal place rounded off होना चाहिए properly. अगर वो rounded off नहीं होगा, you will lose 1 mark there. And then the final answer should be to 2 decimal places. Again, that should be rounded off correctly. इसमें exactly in instructions को to the dot आपने follow करना है, otherwise आपके marks कट जाएंगे. ठीक है? So this you can do further. I'm going to skip that. Let's move on. Vectors वाला question है. This is relatively straightforward. Let's move on to the next one. We have question number 10 next. Okay, that's complex numbers. Let's try and do this. Okay, question number 10. The complex number 1 plus 2 iota is denoted by u. We've got u equals 1 plus 2 iota. The polynomial 2x cubed plus ax squared plus 4x plus b is denoted by p of x. We've got a polynomial, and that's p of x. Two x cubed plus ax squared plus 4x plus b. अच्छा, उसने कहा है it is given that u is the root of the equation p of x equals 0. Okay, so u इसका एक root है जब p of x की value 0. Find the values of a and b. Now, if u is a root, that means it should satisfy this equation.
राइट, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए पी ऑफ एक्स इक्वल 0 को। तो आप क्या करोगे, आप वो इनपुट कर दोगे इसके अंदर, पी ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, और एक्स की जगह पे क्या इनपुट किया, एक्स की जगह पे हमने इनपुट कर दिया 1 + 2 आयोटा। Why? Because since it's a root, it should satisfy the equation p of x equals 0. So इस equation को satisfy करना चाहिए, किस equation को, p of x equals 0 को। तो इस पूरे को 0 से equate कर दें और x की value 1 + 2 iota input कर दें and see what that gives you. Okay, sorry, what happened there? Yeah, okay. 2 × 1 + 2 iota whole cube plus a into 1 + 2 iota whole square plus 4 into 1 + 2 iota plus b equals 0. ये इक्वेशन है आपके पास। Let's simplify this. Cube को evaluate कैसे करेंगे? You can remember the formula for that if you want. आपके पास ये होता है x + y या a + b whole cube. Binomial से आता है basically. वैसे तो a + whole b cube आपके पास होता है a cube plus 3a² b plus 3ab² plus b cube. ठीक है, this is what you actually get from a + b whole cube. If you don't know that, आप ये कर सकते हो, आप उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। आप लिख सकते हो a + b whole square अलग से इवैल्यूएट कर लें, a + b अलग से इवैल्यूएट कर लें, उनको मल्टीप्लाई कर दें। I'm going to do this because this is quicker. ये बाइनोमियल से आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली a + b whole cube के लिए। 2 into a is 1, so a cube 1 का cube plus 3 into 1 squared into 2 into b as it is plus 3 into 1 into 2 iota का square plus 2 iota whole cube. ये मैंने cube evaluate कर लिया. Now I've got 1 plus 2 iota whole square. Let's do that in the next line. One plus 2 into 2 iota, that's going to be 4 iota plus 4 iota square plus 4 plus 8 iota plus b equals 0. Let's simplify all of this now. 2 बाहर वैसे ही है, अंदर क्या आ गया, 1 plus 3 into 2 iota, that's 6 iota plus 3 into 2 iota का whole square, that's going to be 3 into 4, that's 12 iota square plus 8 iota cube plus a plus 4a iota plus 4a iota square plus 4 plus 8 iota plus b equals 0. ठीक है, अच्छा अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 डाल सकते हैं आप. What does that give us? 1 plus 6 iota minus 12 iota square -1 हो गया. What about 8 iota cube? इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स के अंदर. हम लिख सकते हैं iota cube is the same thing as saying iota square into iota. Iota square नेगेटिव हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, -8 iota from this. I hope that makes sense. ये 8 iota cube था, 8 iota cube को हमने क्या कर दिया, iota square और iota में ब्रेक कर दिया, iota square -1 हो गया, तो ये हमारे पास बच गया -8 iota. ठीक है, what am I left with outside? A plus 4a iota. Again, I've got iota square here. That becomes -4a plus 4 plus 8 iota plus b equals 0. And now let me expand this and bring together the real terms and the imaginary terms. 2 plus 12 iota minus 24 minus 16 iota plus a plus 4a iota minus 4a plus 4 plus 8 iota plus b, that equals 0. Look out for any careless errors. अब यहाँ पे हम देखते हैं constants क्या आ रहे हैं. 2 minus 24, that's -22 and 4, that's going to be -18. अच्छा, एक तो -18 आ गया. बाकी रियल टर्म्स कौन सी आ रही हैं, इसमें आयोटा नहीं है. we've got a here, we've got -4a here, that's -3a and this b, so we've got -3a plus b. ये रियल टर्म्स आ गई.
इमेजिनरी टर्म्स क्या क्या आ रही हैं? We have 12 iota minus 16 iota, that becomes minus 4 iota, plus 8 iota, that's plus 4 iota. एक तो हमारे पास 4 आ गया, 4 iota. उसके साथ what else do we have? We have this 4a iota as well. ठीक है, ये हम इमेजिनरी टर्म्स ऑफ ये बन रहे हैं 4 plus 4a iota. 4 iota plus 4a iota, ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ गए. ठीक है, now we got an equation. Complex numbers equal कब होते हैं? Complex numbers equal होते हैं when the real parts are equal and the imaginary parts are equal. तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे. रियल पार्ट को भी जीरो से इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी हम जीरो से इक्वेट कर देंगे. ठीक है, when we equate the imaginary part to zero, what does that give us? That gives us 4 plus 4a equals 0, and that is a equals minus 1. A की वैल्यू -1 आ गई यहाँ से. Let's put the real part equal to 0. That gives us -8 minus 3a plus b equals 0. A की वैल्यू हमारे पास है -1, so that's -18 minus 3 into -1 plus b equals 0. We will get the value of b from here as well. -18 plus 3 plus b equals 0, and b equals 15 from this. ये हमारे पास a और b की values है. Okay, and that's what we wanted to find. A and b हमारे पास आ गए. All right, I hope that makes sense. Let's move on to the next one. Now it says state a second complex root of this equation. अच्छा, a और b आपके पास real है. ये पूरे polynomial के आपके real coefficients हैं. Whenever we've got a polynomial that has the real coefficients, अगर उसके कोई complex roots आते हैं, वो हमेशा conjugate pairs में आते हैं. Since you know you've got one root here, दूसरा root क्या होगा? इसका conjugate. 1 plus 2 iota conjugate, that's going to be 1 minus 2 iota. You just have to write that there. That gets you 1 mark. Okay? All right, let's move on. Find the real factors of p of x. Okay. So now we know two roots of this polynomial. दो roots आ गए हमारे पास इस polynomial के. 2x cube. Polynomial क्या थी? 2x cube plus ax square plus bx plus 4x plus b, sorry, plus 4x plus b. This was the polynomial. इसमें a और b की values आ गई हैं हमारे पास. a is -1, तो उसकी जगह -1 डाल देते हैं, so it becomes minus x square. b is 15, तो b की जगह पे 15 डाल देते हैं. This is supposed to be 15. Okay, this is p of x now. Now we know two roots of this polynomial. वो कौन से roots हैं? Roots हमारे पास हैं 1 plus 2 iota and 1 minus 2 iota. ये दो roots हैं. अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इन रूट्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे? रिमेंबर, अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो, x equals 2 अगर एक रूट है, तो उसका फैक्टर क्या बनता है? x minus 2. x minus 2 आपका फैक्टर बन जाता है उसका, है ना? We will use the same logic here. We'll use the same logic here and we'll say, अगर 1 plus 2 iota और 1 minus 2 iota आपके रूट्स हैं, write them here again. 1 plus 2 iota एक रूट है, 1 minus 2 iota आपके रूट है. फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास? फैक्टर्स होंगे x minus the first root, x minus 1 plus 2 iota, that's one factor, and the other factor is going to be x minus 1 minus 2 iota. ये आपके दो फैक्टर्स तो ये आ गए. थर्ड हमें नहीं पता अभी, थर्ड हमें निकालना पड़ेगा, बट ये दो फैक्टर्स आ गए. We can simplify this and see what we get from this. इसको simplify करके देखें. x minus 1 minus 2 iota, that multiplied by x minus 1 plus 2 iota. इस पूरे को multiply करना पड़ेगा. What does that give us? That gives us x square minus x plus 2 iota minus x plus 1 minus 2 iota minus 2x iota plus 2 iota minus 4 iota square. राइट, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है.
ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई. Let's see what we are getting from this. Are there any terms that cancel out? Not yet. अच्छा, x square वाली तो एक ही टर्म है. x वाली टर्म्स कौन सी है? minus x and then minus 2 iota x and there is some problem somewhere because this should have cancelled out. X minus x को multiply किया सबके साथ. I'm getting x square minus x plus, yeah, so this should have been 2x iota. ये जो मेरे पास ये थर्ड टर्म आ रही थी यहाँ पे होना चाहिए था x square minus x and then plus 2x iota. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपकी बेसिकली कैंसिल हो जाएंगी. ये कैंसिल हो गया इसके साथ, minus 2 iota कैंसिल हो गया plus 2 iota के साथ. What are we left with? X square minus this x and this x, that becomes minus 2x, and then plus 1 and minus 4 iota square. Minus 4 iota square क्या बन जाएगा? Plus 4, and that is x square minus 2x plus 5. एक आपके पास ये फैक्टर आ गया इसका. ठीक है, दिस इज वन रियल फैक्टर. ओके, अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? यू गॉट द पोलिनोमियल. अब इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे. यू विल गेट द थर्ड फैक्टर जो आपका रियल फैक्टर होगा. ठीक है, अभी डिवीजन के लिए यू कैन यूज एनी मेथड. यू कैन यूज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, लॉन्ग डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, व्हाटएवर यू प्रेफर. ऑल ऑफ दोस मेथड्स वर्क फाइन. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. I'm going to use, अच्छा, synthetic division तो यहाँ पे नहीं कर सकते because it's a quadratic divisor, वो तो नहीं कर सकते. long division कर लेते हैं, या comparing coefficients, both of them will work. Let's do long division and see what we get. 2x cube minus x square plus 4x plus 15. This was the dividend. इसको divide करना है x square minus 2x plus 5 के साथ. ठीक है, this should have been worth more marks actually. It's only 2 marks, इसमें working ज़्यादा है, but anyway. x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आएगा? 2x के साथ. ठीक है, अब 2x को मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ. व्हाट डज दैट गिव अस? दैट गिव्स अस 2x क्यूब minus 4x square plus 10x. We change the signs. This becomes negative, positive, negative. ये cancel हो गया. What are we left with? 3x square minus 6x plus 15. अब क्या करें? x square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x square आएगा plus 3 से. This is your third factor. आपको आगे करने की जरूरत नहीं है. आप करेंगे भी तो आपको cancellation हो जाएगी. You can just confirm that if you want. 3x square minus 6x plus 15, and you get 0 as the remainder. This is the third factor now. 2x plus 5. Factorization क्या हो जाएगी? उसने कहा था real factors इसके निकालें. अब या तो factors लिख दें अलग से, या फिर आप इस तरह से लिख दें x square minus 2x plus 5 into 2x plus 3. This is your factorized form. That's what we needed. Okay, so that's this part. Let's do the next one. On a sketch of an Argand diagram, so this is the working for this part, just for reference. Let's move to the next one. So we're almost ending this paper, and then we start the next one. उसमें सिर्फ 2-3 questions हमें करने हैं, and then we end for today. On a sketch of an Argand diagram, shade the region whose points represent complex numbers z satisfying these two inequalities. अच्छा, अब इस inequalities में क्या होता है? आपने notation समझनी होती है सही तरह से. u क्या है पहले तो वो लिखते हैं. u was 1 plus 2 iota. Okay, u is 1 plus 2 iota. Let me write that here on a side. u is 1 plus 2 iota. ठीक है, अच्छा. Now z minus u modulus that is less than or equal to square root of 5. How do you understand this notation? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है z minus u और मॉडुलस. इसका मतलब ये है distance of z from u that should be less than or equal to 5. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट u मार्क करना पड़ेगा. Let's do that. So let's say we got an Argand diagram that looks something like this.
This is the arcing diagram. We've got the imaginary part here, इसको label जरूर करना है. We've got the real part here. Axis scale दोनों sides पे आपने same रखना है. 1 plus 2 iota. So let's say this is 1 here and this is 2. This is the point 1 plus 2 iota. अब उसने क्या कहा है? Distance of z from u should be less than or equal to square root of 5. Square root of 5 से कम distance होना चाहिए. अब इसमें क्या बनता है? Distance from a point. इसके लिए हम क्या बनाते हैं? The locus here is going to be a circle. ठीक है? Circle कितने radius का? Square root of 5 radius का. Now if you think about this, इस point u से origin का distance कितना है वाला? 1 square plus 2 square 5 का स्क्वायर रूट, ओरिजिन का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है. तो बेसिकली जो सर्कल आप बनाएंगे यहाँ पे, इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन से पास करना चाहिए, राइट? दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इस तरह का आप एक सर्कल बना देंगे यहाँ पे रफली. वेल दैट्स नॉट रियली अ सर्कल. लेट मी ट्राई अगेन. So this is what the circle might look like. You should draw it using a compass. इसका फायदा ये होगा आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में सोचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आपका सर्कल थोड़ा सा एक्यूरेट है. Unfortunately, I can't use a compass here. मेरा इसका शेप वाला टूल है वन नोट का इतना अच्छा नहीं है, तो I'm just going to draw it roughly. Let's assume it's a circle, even though it doesn't look like one. Okay, let me try again. Okay, so let's assume it's a circle. ठीक है, and the radius of the circle is square root of 5. ठीक है. Now, since this means distance of z from u should be less than or equal to 5, z point किधर हो सकता है? इस सर्कल के कहीं अंदर हो सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता. That's one thing. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा है आर्गुमेंट ऑफ z should be less than or equal to pi over 4. so, क्या मतलब? आर्गुमेंट कहाँ से निकालते हो? ओरिजिन से. ओरिजिन से आप एक लाइन बना रहे हो. लाइन कैसी बना रहे हो? पाई ओवर 4. पाई ओवर 4 डिग्रीज के अंदर क्या होता है? 45 डिग्रीज. तो बेसिकली ये ग्रेडियंट 1 की लाइन होगी. 1 से यहां से पास करेगी. इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. ये लाइन है आपके पास. दिस इज द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द एंगल पाई ओवर 4. यहाँ पे एंगल पाई ओवर 4 बन रहा है. इस लाइन से आपका आर्गुमेंट लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए. So there are two conditions now. You should be inside the circle. The first condition that you had on the left side, that tells you inside the circle hona chahiye. So you have to be inside the circle. And the second condition tells you कि जो argument वाली line मैंने बनाई है इसके आपको नीचे होना चाहिए. आप इस region में हो सकते हो. तो आपका shaded part कौन सा हो जाएगा? Circle के अंदर और line से नीचे. That's going to be this region here. ये आपका shaded part हो जाएगा. ठीक है. That's your locus. That's the shaded part that satisfies that condition. So now let's find the least value of the imaginary part of z for points in the shaded region. Okay, imaginary part, ये आपका vertical axis imaginary part को represent कर रहा है. Imaginary part आपका least कहाँ पर होता है? That is what we've got to figure out. Imaginary part least कहाँ पर होता है? Now if you think of this, सबसे आपने वर्टिकल एक्सिस पे देखना है. वर्टिकल एक्सिस के ऊपर इस तरह से what is the lowest point that you've got in the shaded region? What's the lowest point that you've got? Lowest point जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, that's basically this point here. Center of the circle से directly नीचे ये वाला point. इसकी लीस्ट ये वैल्यू आपने बतानी है. इमेजिनरी z, ये बेसिकली इसके ये वर्टिकल एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है ये बताना है. अब ये कैसे आपको पता चलेगा? सेंटर का ये पॉइंट क्या है? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 2 है. आपको पता है रेडियस कितना है? रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑफ द सर्कल. तो 2 में से आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कर देना. सो दैट्स बेसिकली गोइंग टू बी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. दैट्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ठीक है. ये वाले पॉइंट क्या जो आपका वर्टिकल एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है, दैट्स दिस. अब इस तरह लिखते हैं. एग्जैक्ट मांगे या क्या? उसने कहा एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए.
so you just leave it like this, 2 minus square root of 5. अगर decimal में लिखना होता है इसकी decimal value evaluate कर सकते हैं. All right, so that's what we have here. This was this paper, November 2021, paper 3 variant 1. We are done with all the difficult questions that we had in this paper. Now let's move on to the next one. उसके सिर्फ 2-3 questions हैं, थोड़े से tricky हैं, so we should be done in the next half an hour or so, inshallah. This is the next paper that we have, October, November 2021, paper 3 variant 3. There are 3 questions that I've marked on this. Questions 6, 10, and 11. These are relatively trickier. ये 3 questions हम इस paper के करते हैं, then we end the session. Let's begin this right away. Okay, let me just have a few seconds break. All right, let's try this now. So this is November 2021, paper 3, variant 3. These are the 3 questions that we are going to do from this paper. 6, 10, and 11. Okay, let's do this. 1 आसान है, 2 भी आसान है, 3 is also relatively straightforward. 4 में आपको integration by parts करना है सिर्फ. 5 is trigonometry. Let's do this. Question number 6. ये भी इतना खास मुश्किल नहीं है वैसे, but it's slightly different from the questions that you usually see on this concept. So let's have a look at this. Okay, so it says by first expanding cos of x minus 60, show that this expression can be written in the form r cos x minus alpha. पहले तो उसको expand कर लें cos x minus 60 को. Let's do that expansion. X minus 60 degrees. Cos का हमारे पास क्या identity होती है? You can look at the formula sheet. Formula sheet में लिखा होता है cos of A minus B. That's identical to cos of A into cos of B plus sin A into sin B. That's the identity that we are given in the formula sheet. Let me just show that to you very quickly as well. ये आपका formula sheet है. This is where you're given these compound angle identities. हमें ये वाली form use करनी है. Cos of x minus 60, तो minus वाली we want this one. इसकी minus वाली form use करनी है. जब left पे minus होएगा तो right पे क्या होगा? Right पे plus आ रहा होएगा. ठीक है? So that's what we're using here. What does this turn out to be? Cos of x into cos of 60 plus sin x into sin 60. ये आ गया. Cos 60 क्या होता है? Cos 60 is 1 over 2. So that's going to be 1 over 2 cos x. Sin 60 is square root of 3 over 2. So you got square root of 3 over 2 sin x. This is what we are getting. ठीक है? ये फॉर्म आ गई. अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा है आपने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म के अंदर? आपने इसको कन्वर्ट करना है r cos x minus alpha फॉर्म के अंदर. ठीक है? Now how do we convert it to that form? We say, so ये हमने पिछले पेपर में ये किया था. We say this is A, this first number, this is B. What do we do now? We say r equals square root of A square plus B square. What does that give us? 1 over 2 whole square plus square root of 3 over 2 whole square. Let's see what that gives us. 1 over 4 plus 3 over 4 whole square root, and that is 1. R की value हमारे पास यहाँ से आ गई 1. Is that correct? A square, that is 1 over 2. Okay, so I'm doing something wrong here because उसने क्या कहा था? उसने actually कहा था कि आपको इसको नहीं convert करना, आपको इस चीज को convert करना, right? So मैंने वो उसने चीज convert नहीं किया पहले.
So we're not converting this thing to r cos x minus alpha. We have to convert this thing to r cos x minus alpha, right? So this is not what we're supposed to do here. हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ये evaluate करना पड़ेगा 2 cos x minus 60 plus cos x, right? So that's what we do first. Let me try that. 2 cos x minus 60 plus cos x. What does that give us? 2 से multiply कर दें इस पूरी चीज को. That becomes 1 over 2 cos x plus square root of 3 over 2 sin x. And then you've got plus cos x outside. That gives us cos x plus square root of 3 over 2 sin x plus cos x, and that is 2 cos x plus square root of 3 over 2 sin x. ठीक है, अब ये हमारे पास इसको हमने evaluate कर लिया. अब उसने क्या कहा है? अच्छा, I'm sorry, I'm still missing something here. This should have been square root of 3, कि वो भी 2 से multiply हो गया था. Yeah, so this is what we should have been getting actually. So divide नहीं होना था वहाँ पे 2 से. This is what we are getting. Okay. अब हमें क्या करना है? इसको convert करना है r cos x minus alpha वाली form के अंदर. Now we've got to be a bit careful कि इसको हमने interchange नहीं कर देना. साइन पहले नहीं लिख सकते, कॉस बाद में नहीं लिख सकते यहाँ पे. द रीजन फॉर दैट इज जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है ना इसको, उस फॉर्म में कॉस आ रहा है आपके पास. जब कॉस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, द फर्स्ट टर्म शुड हैव कॉस. जब साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, द फर्स्ट टर्म शुड हैव साइन. ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आपको कॉस रखनी पड़ेगी, और फिर हम कहेंगे जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है दैट इज आर ए, विल कॉल दिस ए. जो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है विल कॉल दिस बी. ठीक है, and then we'll use the formulas. We'll say r equals square root of a square plus b square, and tan alpha equals b over a, and that's going to give us something. R equals square root of 2 squared plus square root of 3 whole squared, that is 4 plus 3, and that is square root of 7. R equals square root of 7. And what about tan alpha? Tan alpha equals square root of 3 over 2. Alpha की value यहाँ पे देख लें, आपको degrees में करना है. You can see what that turns out to be. Tan inverse of square root of 3 over 2. Let's figure that out. Angle degrees, tan inverse square root of 3 divided by 2. Okay, so this is 40.89. It has to be 2 decimal places. तो इसमें लिख देते हैं 40.89 degrees. Alpha equals 40.89 degrees. ये हमने लिख ली. अब उसने कहा आपने इस फॉर्म में लिखना है इसको, उस फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको. It's going to be square root of 7 into cos of x minus alpha. So that's x minus 40.89. That's what we wanted at the end. So we have converted it to this form. ये हमारे पास आ गया. Okay, let's move on. Next, we have to find the value of x in the interval 0 to 360 degrees, for which 2 cos x minus 60 plus cos x, that's basically the same thing as this, जो हमने open किया है, that takes its least possible value. Okay, अब इसकी least possible value निकालनी है. Now again, how do we think about this? Find the value of x for which this has the least possible value. Okay. अच्छा, now let's think कि हमारे पास greatest और least possible values की आएंगी किस तरह से? It's the same method as before. हमारे पास आ क्या रहा है यहाँ पे? We've got square root of 7 cos x minus 40.89. ये तो वही चीज हमारे पास तो पहले आ रही थी, right? हमने जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे प्रूव किया है, अब ये cos के टर्म्स में आ रहा है सर. इसकी लीस्ट वैल्यू कैसे आएगी? cos जो है वो इसकी रेंज क्या होती है, इसका इंटरवल क्या होता है? cos का इंटरवल हमारे पास होता है -1 से लेकर 1 तक. तो इसकी लीस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसकी लीस्ट वैल्यू कैसे आएगी, कब आएगी? जब ये वाला पार्ट जो cos वाला पार्ट है, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा?
ये -1 के इक्वल हो जाएगा. That's what is going to give you the least value of this whole thing, right? Cos आपको पता है किसके दरमियान में होता है? Cos is going to range from -1 to 1. अब यहाँ पे तो कोई स्क्वायर भी नहीं है ना, तो लीस्ट वैल्यू तब आएगी जब -1 आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी जब +1 आएगा, तो लीस्ट वैल्यू कब आएगी जब ये वाला पॉइंट -1 के इक्वल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉइंट को -1 से इक्वेट कर देते हैं. Cos of x minus 40.89, that should equal -1. And then we solve this trigonometric equation. कैसे solve करें इसको? Now this is -1, 0, 1, -1, जो तीन values होती हैं. Remember इसमें हम quadrants वाला method नहीं use कर सकते. So we either think of the graph or we just input some specific values. हम graph का सोच सकते हैं. यहाँ पे graph का कैसे सोचें? हमें पता है कि cos का graph ऐसा होता है. -1 वैल्यू कब होती है? इस पॉइंट के ऊपर. इस पॉइंट पे एंगल क्या आ रहा होता था यहाँ पे? 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीज आपका एंगल होएगा यहाँ पे, ठीक है. So you basically get x minus 40.89 equals 180, and that's going to give you x equals 220.89. x की वैल्यू ये आ जाएगी. Now of course it would have been safer to first find the range, लेकिन उसका यहाँ पे फर्क पड़ना नहीं था. x क्योंकि 0 और 360 के दरमियान में है, x minus 40.89 जो है that would have been between -40.89 and 319.11. तो आपके पास वैल्यू यही आनी थी इंटरवल. उस इंटरवल के अंदर इंटरवल चेंज करते भी आप इसको एडजस्ट करते भी जो आपको करना चाहिए वैसे वो करते भी आपके पास यही वैल्यू आती. 180 से हमने इक्वेट कर दिया उसको. वी गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 220.89 एंड दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. ठीक है, अच्छा ये आ गया. Let's move on. That was question number 6. That was one question that we wanted to do from this. Your next question number 7. इसमें आपको implicit differentiation use करनी है. You can find this derivative. Next part में tangent parallel to x-axis. Derivative को 0 से equate कर लें. Simultaneously solve कर लें first part के साथ. Vector equation निकालनी है. Direction आ जाएगी. एक point होगा. Equation आ जाएगी. Length of the perpendicular from O to MN. Perpendicular distance. Standard method जो उसका होता है. Distance between a point and a line. ये भी find कर सकते हैं. Question number 9, stationary point again, derivative निकालने, equals to 0 करना है, substitution use करके integration करना है. That's not too difficult. Let's try this one. This is the differential equation. Let's do this. इसमें आपको differential equation पहले खुद से build करनी है. ठीक है, let's try this. There's a large plantation. This is question number 10 that we're doing next now. A large plantation of area 20 kilometers square is becoming infected with a plant disease. At time t years, the area infected is x kilometers square. Achha, so what are the variables that we've got? Time t years, area infected, that is x kilometers square. So we've got the area infected and we've got the time. The rate of increase of x is proportional to the ratio of the area infected to the area not yet infected. Okay, when time equals 0, x equals 1 and dx over dt equals 1. Acha. When the area infected is x, what about the area not infected? Not infected कितना area होगा? That will be 20 minus x square, because 20 is the total area. उसमें से x square minus कर दें, x minus कर दें, sorry, 20 में से x minus कर दें. That's the area that's not infected. Okay, so what we have here is that the rate of increase of x क्या मतलब है? dx over dt is proportional. जब उसने सिर्फ proportional रखा हो, you assume it's directly proportional. अगर inversely होता उसने inversely mention किया होता. अगर सिर्फ proportional रखा है, that's directly proportional. dx over dt is proportional to the ratio of the area infected, that's x, to the area not infected, so x over 20 minus x. That's what we've got. ठीक है, that's what your relationship turns out to be. अब इसको उस फॉर्म में लिखें. ये आपके पास proportionality है, proportionality constant डाल दें. Equation आपकी क्या बन जाएगी? kx over 20 minus x. That's the equation. Now you've got to find the value of
k, क्योंकि यहाँ पे इसने आप शो करने के लिए कहा हुआ है, उसमें k की टर्म्स मैंने नहीं रखा हुआ, k की वैल्यू 19 उसने रखी हुई है, तो उसने एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, उसने बताया कि dx over dt is 1 when x equals 1, तो ये इनपुट कर दें इसके अंदर, इनपुट x equals 1 and dx over dt equals 1, ये इसके अंदर इनपुट कर देते हैं. We get 1 equals k into 1 over 20 minus 1, and that gives us k equal to 19. So the differential equation therefore turns out to be dx over dt equals 19x over 20 minus x. ये हमें प्रूव करना था. That's the first part. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है? Solve the differential equation. Solve the differential equation. Walaikum assalam, Zain. That's an interesting question. I think I'll pass. Paper 3, 20 days में. It really depends on what you are referring to when you say starting from scratch, because scratch से पूरा करना 20 days में, that's a big ask. अगर आपको कुछ भी नहीं आता पहले से, I can't really answer that. I have no way to satisfy you on that. But of course, you should try your best. इस पे आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो yearly practice करने का कोई फायदा नहीं है. Focus on concepts. Concepts cover करें, जो main key topics हैं उनको cover करें, उनके topical practice करें. बस आखिरी दिन जाके एक दो दिनों में yearly practice कर लें. लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आपका पहला focus topical होना चाहिए. Okay? All right. Acha, solve the differential equation and show that when t equals 1, the value of x satisfies this equation. Okay. इस differential equation को हमें solve करना है. dx over dt equals 19x over 20 minus x. And show that when t equals 1, the value of x satisfies. Oh, what happened? Go back there again. Question number 10. Okay, we were here. Acha. dx over dt equals 19x over 20 minus x. We have to solve this differential equation and show that when t equals 1, the value of x satisfies this equation. Okay, let's solve this differential equation. Solve करने के लिए क्या करते हैं? We separate the variables first. यहाँ पे t तो है ही नहीं, x ही है सिर्फ. x वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाते हैं. We get 20 minus x over 19x dx. On the right side, we've got dt. Let's integrate both sides. इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया. But now, of course, when you integrate both sides, left side is going to be integrated with respect to x, and the right side is going to be integrated with respect to t. Right side is pretty straightforward. Right side पे क्या आ जाएगा? Right side पे simply आ जाएगा t dt 1 dt. So अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो you can basically assume it to be 1. You've got 1 dt, 1 can integrate with respect to t. क्या होगा? T होगा. And you've got a constant here, t plus c. That's what we've got on the right side. अब left side को कैसे integrate करें? 20 minus x over 19x. How do we integrate this? Any quick ideas? Quick ideas, क्या करें? Fraction है. Can we apply the log form here? 19x का derivative 19 है. ऊपर 19 आ सकता है किसी तरह से? नहीं आ सकता. Tan inverse form लगती है? नहीं लगती. वही form नहीं है. ऊपर constant नहीं है. Partial fraction तो उसमें सेंस नहीं बनती. आपके पास a के फैक्टर है नीचे. What do we do then? क्या करें यहाँ पे? प्रोडक्ट बना के इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएं, or is there something simpler that we can do here? We can actually break the fraction, right? देखें ऊपर दो टर्म्स आ रही है ना, 20 minus x. हम क्या कर सकते हैं? We can break it into two parts. We can say it's 20 over 19x का इंटीग्रल minus x over 19x का इंटीग्रल. So we can break it down into two parts like this.
ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? 19 का इंटीग्रल, 19x का डेरिवेटिव क्या होता है? 19 होता है। हमें ऊपर न्यूमरेटर में 19 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 20 को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अंदर हम 19 लिख देते हैं, अंदर बेसिकली 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 19 इनसाइड, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बाहर 19 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज व्हाट वी गॉट। अब ये हमारे पास लॉग फॉर्म आ गई इंटीग्रल के अंदर। दूसरे वाले को क्या करें? दिस इज जस्ट व्हाई इज दिस हैपनिंग? ओके, दूसरे वाले को क्या करें? दूसरे वाले में हमारे पास x और x कैंसिल हो जाते हैं। What are we left with? We're left with 1/19 का integral. And now we can integrate both of them easily. The first one becomes 20/19 times log x, log of 19x. And here we have 1/19 times x. And on the other side, we've got t plus c. Okay, this is what I'm getting. 19 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को. What does that give us? That gives us 20 ln of 19x let's check this again. Yeah, so minus x that equals 19t plus c. That's what we end up getting. ठीक है. What do we do now? हमें शो करना है कि जब t की वैल्यू 1 है, जब t की वैल्यू 1 है तो x equals this thing. अच्छा, पहले तो c फाइंड करना पड़ेगा. c कैसे फाइंड करें? Do we have any information for this? We know that when t equals 0, dx over dt equals 1 and x equals 1. अच्छा, when t equals 0, x equals 1. ये इनपुट कर देते हैं. t equals 0 and x equals 1. Let's input that there. We have 20 ln of 19 times 1 minus 1 that equals 19 times 0 plus c. ठीक है. c क्या आ गया? c हमारे पास आ गया 20 ln 19 minus 1. This is the value of c that I'm getting here. ठीक है. अब इसको जाके हम इनपुट कर देते हैं ऊपर. हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? 20 ln of 19x minus x equals 19t plus 20 ln 19 minus 1. अब उसने क्या कहा है? When t equals 1, show that x satisfies this equation. t की वैल्यू 1 इनपुट कर दें. $19 in the numerator and 19x in the denominator. Where exactly? दानियाल किस स्टेप के ऊपर? Well, we could actually do that. Why didn't I do that? It would have become so simpler, a lot simpler. You mean at this step? Yeah. So we should have actually cancelled this out. अगर अब इस स्टेप की बात करें, यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते थे. ln के अंदर हमारे पास अब log आ सकता था. We could do that here right at this step. यहाँ पे कर सकते थे, या फिर 19 को हम बाहर ही लिख सकते थे. वैसे हम 20/19 को पूरे को बाहर लिख सकते थे, and that would have made it a lot simpler. वैसे चल हमने चले इस तरह कर लिया. अब तो नीचे आके यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन कुछ हो सकती है. यहाँ पे क्या कैंसिलेशन हो सकती है? नीचे आके या अगर वैसे यहाँ, so that's a very good point. यहाँ पे हम पूरा कांस्टेंट बाहर लेके जा सकते थे. That would have made it so simpler actually. 20/19 को पूरे को बाहर ले जाते और अंदर हमारे पास रह जाता 1/x dx. वो फिर हो जाता 20/19 ln x simply, right? But what we are getting here is equivalent to that, although not exactly the same, लेकिन वो equivalent है.
So even if we end up going in this direction, we should end up getting the same result at the end. So let's see if we do that, if we are able to get to that same result at the end, if we end up going in this direction. Let's try this. इसी पे जाके कोशिश करते हैं कि हमारे से होता है कि नहीं. t equals 1 input कर दें आप, t equals 1 input कर दें and see whether we can get to this step, this form. अच्छा, t equals 1 input किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 ln 19x minus x equals 19 plus 20 ln 19 minus 1. Now we need to make x the subject. No, x subject नहीं है, एक x separate है और right side पर e power something है, तो आपने एक side पे basically ln वाली term को एक side पे रख लेंगे, ठीक है, ताकि फिर वो e दूसरी side पे जाके वो power में चला जाए. तो ln वाली term को अलग रख लें, ln वाली term को मैं यहीं पे रहने देता हूँ. I'll take everything else to the right side, and that gives me 18 plus 20 ln 19 and plus x. ठीक है. Now I can divide 20 on the other side. That gives me ln 19x equals, यहाँ पे कोई error तो नहीं नजर आ रहा? Is the calculation all okay? ऊपर इसमें कोई calculation error तो नहीं नजर आ रहा? Because it does look to be getting a bit complicated. अच्छा, खैर, let's actually divide by 20 there. अगर हम divide by 20 वहाँ पे कर देते हैं, we have 18 over 20 plus ln 19 plus x over 20. अब क्या आएगा, ये e की पावर में चला जाएगा, 18 over 20 plus ln 19 plus x over 20. अब उसको अगर हम ब्रेक कर लें, becomes 19x equals e power 18 over 20 into e power ln 19 into e power x over 20. अब वहां पे क्या होएगा, ये हो जाएगा 19x equals e power 18 over 20 multiplied by e raised to power ln 19, ये तो 19 बन गया, into e power x over 20. 19 cancel हो गए. We have x equals e power 18 over 20 plus x over 20. Now, what were we getting there? 0.9 plus 0.05x. 0.9, so that is fine. This is 0.9. 18 over 20 is 0.9, and this is 0.05x. So we do end up getting the same result eventually. वो हमारे पास आ गया, but yes, it did become quite complicated. So this is one way to do it, right? Now I'll just make it simpler and do it again, ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि इससे आसान हो सकता था. But this is what we do here. This is what we could do here if we ended up going in that direction. We हमने end up prove कर दिया. But let me just erase all of that now and go back and do it in a slightly quicker way. Okay, so we were here. ऊपर, yeah, so let me actually take this down as well. हम इस पॉइंट पे क्या कर सकते थे, इसको मैं ब्रेक किया दो पार्ट्स के अंदर. 20 over 19 पूरे को बाहर ले जाना, दैट्स अ कांस्टेंट, राइट? वो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठा के बाहर लेके जा सकते थे. एंड देन वी कुड जस्ट इंटीग्रेट द पार्ट दैट इज इनसाइड. उससे क्या होता है, ln के अंदर हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है. वी वुड गेट 20 over 19 ln x minus 1 over 19 x equals t plus c. Now we can multiply 19 on the other side. That's 20 ln x minus x equals 19t plus 19c. c के साथ आप बेशक आप उसको c को आप नया कांस्टेंट बना दें और उसको कहें कि अच्छा this is 19, this is just another constant. Now d या उसको 19c करना चाहे वो भी कर सकते हैं, that's your choice. अब क्या करना है, अब वो वैल्यूज इनपुट कर दें. क्या वैल्यूज इनपुट करनी थी, x t equals 0 and x equals 1. Let's input them.
t equals 0, x equals 1, to keep it that way in case anyone gets confused. 19c हो गया ये हमारे पास क्या आ गया, 20 ln 1 minus 1 that equals 19 into 0 plus 19 times c. ln 1 0 हो गया, 0 minus 1 that equals 0 plus 19 c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है -1/19। ठीक है, इस तरह से हमारे पास -1/19 c की वैल्यू आ गई। Now we've got that equation. That equation is 20 over 19 ln x minus 1 over 19 x equals t minus 1 over 19. And if we just multiply the whole equation by 19, we get 20 ln x minus x equals 19t minus 1. अब हमें क्या करना है, we want this form x equals e raised to power 0.9 plus 0.05x. राइट साइड पे e की पावर में कुछ आना चाहिए, राइट साइड पे e की पावर में कुछ आना चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, लॉग टर्म लेकर आएंगे और बाकी सब कुछ राइट पे ले जाएंगे। उसने कब कहा है, when the value of t equals 1, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 1 इनपुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू 1 इनपुट कर दें पहले, and then we have to convert it to that form. t 1 इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, we will get 20 ln x minus x equals 19 minus 1 and that becomes 20 ln x equals 18 plus x. ठीक है, now this gives us ln x equals 18 over 20 plus x over 20. अब उसने ऊपर डेसिमल्स में रखा हुआ है वो, अब इसको अगर डेसिमल्स में लिख दो तो बेसिकली becomes ln x equals 0.9 plus 0.05x. So x equals e power 0.9 plus 0.05x. आप ये जो e बेस थी उसको दूसरी साइड पे ले गए, उसकी बेस बन गई, and you get that result जो आपने प्रूव करना था। Okay, so that's what we could do here. That's slightly quicker. Leave what as c? Yes, you can leave it as c. So I just left that as c eventually. So that's fine. Okay, let's move on. Let's do the last one now. इसका एक part रहता है, in fact. अच्छा, next part is use an iterative formula based on the equation in part B. I'm not going to do this. I'll just tell you the iterative formula. हम आप कर लेंगे उसके बाद. What's the iterative formula based on the equation in part B? Equation is x equals e power 0.9 plus 0.05x. Iterative formula क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपने n लगा देना, n plus 1, और राइट साइड पे आपने n लगा देना x के साथ। ठीक है, ये आपने यूज करना है। इनिशियल वैल्यू ऑफ 2 उसने आपको बता दिया, आपको x1 क्या लेना है, x1 आपको लेना है 2। ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला, मेक श्योर दैट यू टेकिंग केयर ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और उनकी राउंडिंग ऑफ सही करनी है, लास्ट डेसिमल प्लेस आपने राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, यू कैन डू दैट। उसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t एट व्हिच द एंटायर प्लांटेशन बिकम्स इन्फेक्टेड। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस। आइट्रेशन वाला पार्ट आप खुद करेंगे, अब देख लेंगे। लास्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, at which the entire plantation becomes infected. So you have x equals e raised to power 0. अच्छा नहीं, वो तो t की वैल्यू 1 इनपुट की थी हमने, इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास कहीं पे, before inputting t equals 1 we had this equation. This was 20 ln x minus x equals 19t minus 1. This was the relationship between x and t that we got. अच्छा, entire plantation gets infected का क्या मतलब है? If you look at the question, total plantation आपके पास कितनी है? It was 20 kilometers square. तो x is representing the infected area. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू को simply 20 इनपुट कर दोगे कि सारी की सारी इन्फेक्ट हो गई है। So when you input x equal 20,
आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 20 ln 20 minus 20 equals 19t minus 1. Calculate t from this and that will be result. ठीक है, इसमें आप उसने कोई आपसे कहा नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप डेसिमल्स में लिख दोगे 20 ln 2 ln 20 minus 20 plus 1 divided by 19, and that gives me 2.153, or you can write it to three significant figures. That's 2.15. Okay, so that's what we get. Now let's do the last question, and then we end. It's been a long class. Question number 11. The complex number minus square root of 3 plus iota is denoted by u. Express u in this form, r_e raised to power iota theta modulus argument form में इसको represent करने, इसका argument निकाल लें और इसका modulus निकाल लें. r कैसे आएगा? r is square root of a square plus b square, right? So square root of 3 का whole minus square root of 3 का whole square plus iota का coefficient क्या है? 1 का square, and that's going to give you the modulus. That's going to be 3 plus 1, that's square root of 4, which is 2. R की value 2 आ गई. And then you find the modulus. Modulus कैसे find करते हैं? आपने पहले इनको divide कर देना है. Tan theta, you'll say, और इसको basic angle निकालने पहले. Positive values लेके 1 and square root of 3. So 1 over square root of 3. Imaginary part की coefficient को real part के coefficient से divide कर देंगे. You'll get the basic angle. 1 over square root of 3 का tan inverse क्या होता है? Let's try that. Radians में, remember, angle unit radians में tan inverse of 1 divided by square root of 3. This is pi over 6. Basic angle आपका आ रहा है pi over 6. And now you think of which quadrant you are in. कौन से quadrant के अंदर है? आप वो देखें, जो complex number है, negative real part and positive complex part. So we're going to be here in the second quadrant. हम यहाँ पे हैं. ये value pi over 6 है. तो angle क्या बनेगा? Argument क्या बनेगा आपके पास? It's going to be this angle, which is 5 pi over 6. Right? Pi में से pi over 6 minus कर दिया. That's 5 pi over 6. The argument, therefore, the value of theta is 5 pi over 6. तो वो form में क्या हो जाएगा फिर आपका final result? r_e iota theta. It's going to be 2e raised to power iota 5 pi over 6. This is the complex number that we have. Now it says, hence show that u raised to power 6 is real and state its value. U raised to power 6 find कर लें. 2e raised to power iota 5 pi over 6. इसकी whole power क्या कर दें? 6 कर दें. 2 की power भी 6 होगी. ठीक है. और e power क्या हो गया? iota 5 pi. ठीक है. 2 power 6 होगी और इसकी power में इसको 6 से multiply किया तो iota 5 pi हो गया. Now this is what we are getting. Now how do we show that it's real and we have to shade its value? तो इसको क्या करेंगे? इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. वो कैसे करते हैं? इसको cos थीटा प्लस आयोटा थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. रिमेंबर, r_e iota theta is equivalent to r into cos theta plus iota sin theta. So we can convert it to that form. r की जगह पे क्या डाल दें? 2 raised to power 6 cos theta, that's cos 5 pi plus iota sin 5 pi. What do we get? 2 raised to power 6 क्या है? 64. cos 5 pi, cos 5 pi आप कैलकुलेटर से evaluate करें, देखें आपके पास क्या आता है. That's -1 plus iota into sin 5 pi. sin 5 pi आपका 0 आएगा. And what you end up getting is -64. So u raised to power 6 is equal to -64. ये आपको evaluate करना था. ठीक है. Let's move on. On a sketch of an organ diagram, we have to shade the region whose points represent the complex numbers z satisfying these two inequalities. Argument of z minus u, that should be less than or equal to
pi over 4 and real part of z should be less than or equal to 2. ये दो चीजें शो करनी है हमें. Now how do we do this? u पहले लिख लें. u क्या चीज है? हमने u पर कहीं पे लिखा हुआ था. u was given to be minus square root of 3 plus iota. That is u. Minus square root of 3 plus iota. Now let's draw the Argand diagram. It's going to look like this. This is the Argand diagram that we have. We have the imaginary part here, and we have the real part here. ठीक है. अच्छा, हमें क्या करना है? Argument of z minus u. Argument of z minus u क्या मतलब है? आपने u point को mark करना है पहले. Minus square root of 3. That's going to be somewhere here. 1 ऊपर, so that may be somewhere here. Let's say this is the point that we have. This is u. ये point mark कर लिया. u के ऊपर आप क्या करोगे? एक horizontal line इस तरह से का सोचोगे. उससे एंगल आपने देखना है 0 और पाई और 4 के दरमियान में होगा. तो इस पॉइंट के ऊपर आप पाई और 4 की लाइन बनाओगे. That's going to be like this. Pi over 4 यानी कि 45 degrees. So this is the line of pi over 4. Argument of z from the horizontal line at u. इसका क्या मतलब होता है इस फॉर्म का? जो लिखा हुआ है इसका मतलब है argument of z या angle of z from the horizontal line drawn at u. इस u के ऊपर horizontal line बनाएंगे. उसका उस पे हमने ये pi over 4 का एंगल बना लिया और ये एंगल 0 है. इनके दरमियान में होना चाहिए. So we can be anywhere in this shaded region. इसके दरमियान में कहीं भी हो सकते हैं. That's one thing. फिर उसने क्या कहा है? Real part of z जो है, real part of z that should be less than or equal to 2. अब real part of z किधर होएगा? x axis के ऊपर. So let's say this is 1. This is going to be 2. यहाँ पे आप क्या करोगे? एक आप vertical line बना दोगे, because that's where the real part of z is equal to 2. ये आपका real part of z equal to है यहाँ पे. इससे आप left side पे होना चाहिए. So what's the part that satisfies both conditions? ये triangle जो आपके पास बन रही है, this is the part that satisfies both conditions. Angle आपका 0 और pi over 4 के दरमियान में, u से u पे जो line बनाई है, उनके दरमियान में angle आ गया. और जो real part है z का, that is less than or equal to 2. तो 2 वाली vertical line की हम left side के ऊपर है. This is the shaded part that we have here. Okay, I hope that makes sense. That was this part. Now it says find the greatest value of modulus of z for points in the shaded region. Give your answer correct to 3 significant figures. Modulus of z का क्या मतलब है? Distance from the origin. Origin से maximum distance आपका कहाँ पर है? इस triangle के अंदर. You can see that here. ये जो point आपके पास यहाँ पर होएगा, इसका maximum distance है. तो इसका distance आपने find करना है origin से. ये distance find करना है. ठीक है? How do you find that distance now? इस point का distance origin से. Let's think about this. We know कि इसका ये coordinate क्या है? X coordinate तो इसका 2 है. ये तो हमें पता है. ठीक है? The problem is we don't know the Y coordinate for this. Y coordinate कैसे आ सकता है इसका? Is there a way that we have for this? Let's think about it. We know that this angle here. We know that this angle here is pi over 4. ये angle pi over 4 है. अगर ये pi over 4 है, तो yeah, so this is 45 degrees. 45 अगर ये pi over 4 है, ये 90 है, तो ये ऊपर वाला एंगल भी pi over 4 होएगा, right? Because ये pi over 2 है, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. So it's going to be an isosceles triangle. Isosceles triangle का मतलब ये है, जो आपकी इसकी ये लेंथ होगी, वही आपकी ये वर्टिकल लेंथ होगी. Does that make sense? Because the opposite angles are equal. Pi over 4 angles हैं. तो ये horizontal length कितनी है? Horizontal length हमारे पास है, ये horizontal length. This is 2 minus square root of 3.
Let me actually mark those points. Let's call this A, let's call this B, let's call this C. So AB जो length है, that is 2 minus square root of 3, which is 2 plus square root of 3. तो जो BC length होगी वो भी आपकी इसी के इक्वल होगी. Why? Because it's an isosceles triangle. BC length भी वही आ गई. ठीक है, B से C की लेंथ भी वही आ गई. अब इसका क्या मतलब हुआ? Let me actually write this in decimals. Decimals में क्या आता है? Let's figure that out. 2 plus square root of 3. उसने exact नहीं मांगा ना, हमसे 3 significant figures में मांगा. इसको decimal में लिख देते हैं. 2 plus square root of 3. What's that? 2 plus square root of 3. That is 3.73. So this is 3.73. ये BC की लेंथ आ गई. तो ये टोटल हाइट कितनी होगी फिर उस पॉइंट तक? वो कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया? It's going to be 3.73. ये वाली हाइट है. उसमें आपने ऐड कर दिया नीचे वाला 1. ये हाइट 1 थी, वो ऐड कर दिया. टोटल क्या बन गया? 4.73. So the point C has coordinates. The point C has coordinates 2 and 4.73. ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. अब डिस्टेंस फाइंड कर लें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लें. उसका कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला. It's going to be modulus of Z. That's going to be square root of 2 square plus 4.73 square, or उसका square root. You can see what that turns out to be. 4 plus 4.73 का square, and then you take square root of that. For me, that turns out to be 5.135. आपको आंसर 3 significant figures तक देना. ये आ रहा है 5.1355. So this rounds off to 5.14. And that's the greatest value of the modulus of Z. That's what we were looking for. Okay, so that was this last part. And that completes this paper in terms of the difficult questions that we had to attempt from this paper. And that's it. We end the session here. Thank you very much for joining. I will see you again in the next session. I hope this was helpful. It has been a long session. Now, what are we doing tomorrow? Tomorrow we are starting. Let me go back there. Tomorrow we are doing this paper. हम अब जून के पेपर स्टार्ट करें. कल इंशाल्लाह हम जून 2021 पेपर 1 वेरिएंट 1 ये कर रहे होंगे.